So, good evening, everyone, and a very warm welcome to today's Witty Wednesday. Uh, आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक, एक ऐसे सब्जेक्ट पे विच इज मोस्टली मिसअंडरस्टूड, विच इज फंड ऑफ फंड प्रोडक्ट, जो अक्सर हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं. But the truth is, it can open doors to many opportunities that otherwise, we are facing, difficulties as an individual investors to access. So sometimes we like the AMC and we like multiple product of the AMCs. So we cannot because we need to check the different kind of weightages in the AMC. We have to maintain the weightages in the asset class as well. So how we can diversify? So fund of fund can make all of this possible, but at the same time, I would say there are many questions which comes. First is fund of funds क्या होते हैं, exactly क्या होता है. Second is mostly people have the question on the expense ratio कि आपको double expense ratio pay करना पड़ता है, and what is the taxation on that. uh, कब चूज करना चाहिए, कैसे चूज करना चाहिए आपको फंड ऑफ फंड. सो आज हम इन्हीं सब सवालों के आंसर्स वी विल फिगर इट आउट. And for this, to help us to decode fund of fund, we have with us Mr. Ronak. He is a senior product specialist at ICICI Asset Management Company. He is having a more than a decade's kind of experience, and he will explain us uh, when people hear the term fund of funds, they often assume it's simply a fund investing in another fund. But what's the real idea behind this structure, and why was it created in the first place? So over to you, Ronak. Yeah, thank you, Ritu. And hi, everyone. Thank you all for joining the call. As you know, this call is basically regarding the fund of fund. But before starting, Ritu, just one question here. You want it to be completely in English or a mix of Hindi and English like you were A mix of Hindi and English. ठीक, थैंक यू. Yes. हाँ, तो जैसे कि ऋतु बता रहे थे कि फंड ऑफ फंड्स इज बेसिकली रिलेटिवली न्यूअर कॉन्सेप्ट आई वुड से, क्योंकि बहुत सारे एएमसीज इस फंड ऑफ फंड को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं. बट एट आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल वी हैव डन अ फिनोमिनल जॉब इन फंड ऑफ फंड्स. इफ यू लुक एट आवर फंड ऑफ फंड एज अ कैटेगरी, we have significant market share one, and at the same time solutions have been created because we genuinely believe in this product. So today's session will not be towards any of the products of ICICI. No, this is basically on understanding the fund of fund as a category. हम एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में फंड ऑफ फंड कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम रिस्क एंड रिटर्न एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए फंड ऑफ फंड से, वी विल सी दैट. But before starting, let us, first see this picture, wherein you can see that, earlier, even a non-photographer, or basically who is not doing photography in a professional way, used to own a DSLR or a digital camera, right? But all of these things required a lot of different mechanisms. So, for example, a DSLR needs different lenses. आपको एक ट्राइपॉड चाहिए होता है, आपको उसमें कई सारी सेटिंग्स करनी पड़ती है टू गेट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ photograph, right? Whereas today, if you see, you take an example of an iPhone is also used as a professional camera by many of the photographers, and even some of the movies are getting shot by the iPhone. So iPhone basically came as a solution to a product which had multiple complexities, which was DSLR. And henceforth, now if you can see that many people have accommodated a smartphone versus a DSLR. So when the world is full of complexity, people generally look for solution and not products. That is the basic ideology behind a fund of fund.
So now how a fund of fund got the evolution got happened, or why so many people are talking about fund of fund nowadays. अभी आपने सुना होगा पिछले 2 साल से फंड ऑफ फंड के बारे में काफी चर्चा हो रही थी, वेराज उससे पहले करीब करीब 2 years आई वुड से फंड ऑफ फंड के बारे में बात करना ही एकदम छूट गया था। ये ऐसा क्यों हुआ? द रीजन वॉज, prior to 2023, fund of fund schemes actually enjoyed the indexation benefit in taxation. 2023 में जब टैक्सेशन चेंजेस हुए, जब डेट में भी टैक्सेशन इंडेक्सेशन हटाया गया, डेट में टैक्स स्लैब पे टैक्सेशन किया गया, तब फंड ऑफ फंड भी उसी उसी डिफिकल्टी या उसी कॉम्प्लेक्सिटी से गुजरा था, वेर इन even in fund of funds the indexation was removed and now the taxation became a dead taxation which did not appeal to a lot of investors. However, post 2024 budget, interim budget, the taxation of fund was relaxed, wherein if a fund of fund held less than 65% in debt, it could get a 12.5% taxation after 2 years. जब ये चीज हुई उसके बाद we actually could see a lot of interest in the fund of fund as a category, and hence this category picked up. एंड जब भी कोई कैटेगरी पिकअप होती है, सेबी आइडेंटिफाइज इट एंड ट्राइज टू सिंप्लीफाई इट फॉर द इन्वेस्टर्स। ये पहले म्यूचुअल फंड के साथ भी हुआ था, जहां पे आफ्टर द व्हेन म्यूचुअल फंड स्टार्टेड टू गेट अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द ईयर 2017, म्यूचुअल फंड के लिए सेबी कैटेगराइजेशन किया। वैसे ही फंड ऑफ फंड के लिए कैटेगराइजेशन हुआ है इन द ईयर 2025, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड एंड ओवरसीज। विद इन इक्विटी क्या कैटेगराइजेशन है? एक कैटेगरी है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड ऑफ फंड्स, जिसके अंदर अ फंड ऑफ फंड कैन बेसिकली होल्ड एनी ऑफ द डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड स्कीम्स, any of the diversified mutual fund schemes, not the stocks. I am not talking about a large cap stock which a fund of fund will own. No, the fund of fund will hold a large cap fund, for example, a mid cap fund, for example, and a large and mid cap fund, for example. So that is how a diversified fund will work. Diversified fund will not hold any factor based or sectoral schemes, right? जब उसके लिए दूसरी कैटेगरी है जिसे बोला जाता है सेक्टोरल या थीमेटिक फंड ऑफ फंड। यहां पे एक फंड ऑफ फंड कोई भी एक सिंगल सेक्टर, सिंगल थीम या मल्टी सेक्टर थीम्स को लेकर एक फंड क्रिएट कर सकते हैं या फंड ऑफ फंड क्रिएट कर सकते हैं, जो कि सेक्टोरल या थीमेटिक फंड ऑफ फंड में हो सकता है। अगर मैं डेट की बात करूं, डेट में देर आर अगेन टू कैटेगरीज। वन विल बी डाइवर्सिफाइड डेट, जो कि बिल्कुल ही इक्विटी डाइवर्सिफाइड की तरह ही प्ले आउट होगा, बट ऑन दी डेट म्यूचुअल फंड साइड। तो यहां पे मैं कोई भी डाइवर्सिफाइड डेट म्यूचुअल फंड ले सकता हूं, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो, गिल्ट हो। वहीं पर ही एक होता है सिंगल डेट कैटेगरी का एक स्कीम, जहां पे मेरे को कोई एक सिंगल कैटेगरी का फंड लेना पड़ेगा, चाहे कि वो फॉर एग्जांपल हो सकता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बॉन्ड फंड, राइट। बॉन्ड का फंड एक छोटे कैटेगरी में डाला गया है, और अभी तक ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं आया है बॉन्ड वाले एफओएफ में, बिकॉज टैक्सेशन वहां पर भी स्लैब रेट पर ही देखा गया है। जो इंटरेस्ट अभी आ रहा है इन्वेस्टर्स को, वो आ रहा है हाइब्रिड फंड ऑफ फंड्स में, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि अगर मैं देखूं इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड ऑफ फंड, ये एक कैटेगरी है जहां पे डेट प्लस आर्बिट्राज स्कीम्स ये फंड में ली जाएगी एज द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब ये कैसे फायदा करेगा इन्वेस्टर्स को? डेट जहां पे आप देखें एक सेफ तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है, वी ऑल नो दैट वहां पे ड्रॉडाउन्स की उम्मीद कम होती है, एंड इन्वेस्टर्स हु आर नॉट लुकिंग फॉर हाई रिस्क जनरली गो फॉर डेट स्कीम्स। बट डेट में एक इशू है विच इज द टैक्सेशन। टैक्सेशन इन द डेट इज एट द स्लैब रेट। सो जो हायर टैक्स स्लैब्स में रहते हैं उनके लिए डेट अट्रैक्टिव नहीं रहता है, बट वो लोग आर्बिट्राज में चले जाते थे, आर्बिट्राज फंड में चले जाते थे।
बट आर्बिट्राज फंड में भी एक ड्रॉबैक ये रहता है कि ऑल्दो आर्बिट्राज फंड ने भी इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस अच्छा दिया है, एट द सेम टाइम टैक्सेशन भी बहुत फेवरेबल था, इक्विटी टैक्सेशन था। बट वहां पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि एवरी मंथ आपका जो स्प्रेड्स है आर्बिट्राज के, वो वेरी करते रहते हैं। द स्प्रेड्स ऑफ द आर्बिट्राज कीप्स वेरिंग। फॉर एग्जांपल 2 मंथ्स बैक करीबन 80 बिप्स पर 80 बिप्स फॉर द पर्टिकुलर मंथ आर्बिट्राज का स्प्रेड चला करता था, जबकि आज के दिन वो मैं देखूं तो अराउंड अबाउट 60 बिप्स हो गया है। तो ये वेरिएशन जो है डेट में जनरली नहीं देखी जा रही थी। तभी एक ये कैटेगरी उभर के आई जहां पे वी कैन कंबाइन बोथ ऑफ दीज। आई कैन हैव अप टू अबाउट 35% इन आर्बिट्राज स्कीम and remaining in the debt scheme, but get a taxation of 12.5% after 2 years of holding. So this becomes a very interesting proposition for people who are looking for debt investment but are not happy with the taxation. यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको डेट स्कीम जैसा ही एक एक्सपीरियंस मिलेगा। However, the taxation after 2 years of holding is 12.5. Of course, before 2 years it becomes slab rate. एक और है डायनेमिक असेट एलोकेशन फंड ऑफ फंड। ये एक कैटेगरी है जो कि काफी सिमिलर है बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी से। यहां पे जो फंड ऑफ फंड में मैं होल्ड करूंगा वो है अब राउंड अबाउट फ्रॉम 30 to 65% इन equity, and the rest will be in debt. So this becomes an interesting proposition for those people who like to have the equity market returns, however, cannot take the equity market ka volatility. So that is why this scheme has become popular, wherein dynamic, which is called as dynamic asset allocation fund of fund. एक तीसरा हाइब्रिड फंड है जिसे बोलते हैं अग्रेसिव हाइब्रिड फंड ऑफ फंड। अब अग्रेसिव हाइब्रिड फंड ऑफ फंड का क्या रूल है? यहां पे 65 to 80% हैज टू बी इन इक्विटी स्कीम्स, वेयर एज 20 to 35% और अप टू 35% कैन बी इन डेट स्कीम्स। सो एटलीस्ट 20% इन डेट भी रहेगा और 35% इन इक्विटी भी रहेगा। इफ यू ऑलरेडी नो द इक्विटी एंड डेट फंड्स और एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, ये समवट सिमिलर है उसके। यहां पे भी डेट का पोर्शन कम होगा और इक्विटी का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा। सो फ्रॉम अ असेट एलोकेशन परस्पेक्टिव, किसी का अगर सेविंग, इफ बेसिकली दे आर इन द इन द पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल विच इज ऑफ द सेविंग्स मोड और अक्यूमुलेशन मोड, उनके लिए ये एक फंड बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा, जहां पे इक्विटी का पोर्शन ज्यादा रहेगा और डेट का कम। वहीं पर ही एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड ऑफ फंड भी है, जहां पे 10 से 25% का इक्विटी रहेगा एंड 75 से 90 का डेट रहेगा। वही बात है जहां पे थोड़ा सा इक्विटी आपको दिया जा रहा है फॉर द ग्रोथ, बट मैक्सिमम प्रोपोर्शन इज स्टिल डिप्लॉयड इन डेट। इस स्कीम में टैक्सेशन विल बी मोस्ट प्रोबेबली बी in the tax slab, whereas all the three which we discussed prior to this had 2 years 12.5% taxation. लास्टली मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ऑफ फंड भी एक कैटेगरी है फंड ऑफ फंड्स की, जहां पे नॉट ओनली इक्विटी, नॉट ओनली डेट, बट ऑल्सो गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ कैन बी पार्ट ऑफ दिस फंड ऑफ फंड। तो यहां पे एक मल्टी एसेट फ्रेमवर्क इन्वेस्टर्स को मिलेगा, जहां पे लो कोरिलेटेड एसेट्स में फंड मैनेजर इन्वेस्ट करेंगे एंड अक्रॉस द मार्केट साइकिल दिस फंड विल ट्राई टू परफॉर्म। फाइनली हम बात करते हैं कमोडिटीज एंड ओवरसीज फंड ऑफ फंड की। कमोडिटी बेस्ड फंड ऑफ फंड है जहां पे गोल्ड एंड सिल्वर जो अभी अलाउड है, हालांकि आगे जाने के बाद अगर से भी कोई और ईटीएफ्स का भी अलाउंस देती है, देन वो भी इसमें एलोकेट हो सकते हैं। बट एट द करेंट टाइम पीरियड ओनली गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ ही है जो अवेलेबल है इन कमोडिटी स्पेस इन द ईटीएफ फ्रेमवर्क। तो वहां पे एक फंड मैनेजर यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि मेरे को कितना गोल्ड ईटीएफ में रखना है एंड कितना सिल्वर ईटीएफ में रखना है, एंड दैट कैन बी एक्टिवली मैनेज्ड। एंड फाइनली ओवरसीज फंड्स भी है, जो कि आज के दिन में बहुत सारे एएमसीज के क्लोज्ड होंगे बिकॉज द लिमिट्स हैव बीन रीच्ड। बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन,
कई फंड ऑफ फंड्स ऐसे हैं जहां पे एक कंट्री स्पेसिफिक हम एक्सपोजर ले सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू टेक द एक्सपोजर टू से यूएस एज अ कंट्री in a fund of fund, so my fund can actually hold US indices, राइट. सो नास्डैक हो गया या एसएनपी हो गया. वहीं पर ही थीमेटिक या सेक्टोरल बेस्ड फंड ऑफ फंड भी है, जहां पे अगर मुझे मान लीजिए ब्राजील का ऑयल ईटीएफ खरीदना है ब्राजील का, तो वो इस फंड ऑफ फंड के थ्रू खरीदा जा सकता है, ऑल्दो अभी ऐसा कोई फंड अवेलेबल नहीं है. रीजन स्पेसिफिक भी हो सकता है कि अगर मुझे एपैक एज अ रीजन या इमर्जिंग मार्केट एज अ रीजन का प्ले करना है, तो मैं वो फंड ऑफ फंड के थ्रू प्ले आउट कर सकता हूं. वैसा ही सेम डेट में भी एलोकेशन है, किसी एक कंट्री का डेट या किसी एक रीजन स्पेसिफिक डेट फंड्स इस फंड ऑफ फंड में लिए जा सकते हैं. नाउ व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ हैविंग द फंड ऑफ फंड इन द पोर्टफोलियो. सी, यहाँ पे एक दो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, जिसमें वन ऑफ द फ्रेंड्स सेड दैट वी बोथ स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग टुगेदर, बट यू बिकेम फिट एंड आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग. व्हाई इज दिस सो? टू विच द फ्रेंड आंसर्स दैट एक्सरसाइजिंग इज or fitness is not just about exercising. There are four pillars of health: exercise, nutrition, sleep, and stress management. I hope most of you will agree with it. Only exercising doesn't promote health. Wealth creation actually is also very similar, wherein you need a healthy portfolio and not just a a portfolio of just stocks, right? So for a healthy portfolio, there are again four pillars. There is a growth pillars, there is a resilience pillar, there is a opportunity pillar, and there is a liquidity pillar. All of these four are required when you have to make a strong portfolio. अब equity में why it is required? It is obviously because equity has generated a lot of wealth. However, equity में भी large, mid and small होते हैं, जिन्होंने अलग अलग साइकिल में अलग अलग रिटर्न्स दिए हैं. किसी साइकिल में लार्ज कैप ने आउट परफॉर्म किया है मिड एंड स्मॉल कैप को, लाइक इन 2025. किसी पीरियड में मिड एंड स्मॉल ने आउट परफॉर्म किया है लार्ज कैप को, लाइक इन 2024. सिमिलरली डेट में भी ऐसा ही होता है, कभी अक्रूवल अच्छा चलता है तो कभी ड्यूरेशन अच्छा चलता है, कभी गोल्ड रिटर्न अच्छा देता है, कभी इक्विटी से, कभी इक्विटी अच्छे रिटर्न देते हैं गोल्ड से. सेक्टर प्लेज भी होते हैं. तो जब इतनी सारी चीजें होती है, इन्वेस्टर्स जनरली बिकम कंफ्यूज हाउ टू ब्रिंग अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो. फॉर दैट देर आर फंड ऑफ फंड्स. इक्विटी स्कीम भी हो सकती है फंड ऑफ फंड में, थीमेटिक स्कीम्स भी हो सकती है, हाइब्रिड स्कीम्स भी हो सकती है, और फिक्स्ड इनकम स्कीम्स भी हो सकती है. तो अगर मैं एक सिंप्लीफाइड वे में आपको बताना चाहूं कि फंड ऑफ फंड क्या होता है, फंड ऑफ फंड वर्सेस अ म्यूचुअल फंड क्या होता है, टू करेक्ट माई सेल्फ, म्यूचुअल फंड वर्सेस फंड ऑफ फंड क्या होता है. म्यूचुअल फंड इज जस्ट लाइक गोइंग टू अ स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, right? Specialty restaurant mein obviously you get a lot many dishes, but you should always know that there is only one head chef who is working there, right? So basically you are prone to the style of preparation of that one fund manager. तो एक फंड मैनेजर को का टेस्ट जो है, वही टेस्ट आपको मिलता है एक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में. हाउएवर, जब आप फूड कोर्ट विजिट करते हैं, तब कई सारे अलग अलग फ्रेंचाइजीज या अलग अलग रेस्टोरेंट्स होते हैं, जिसमें अलग अलग शेफ्स होते हैं. बेसिकली वहां पे आपको वैरायटी देखने को मिलती है एट वन सिंगल प्लेस. दैट इज द की वर्ड. सिमिलर है आपका फंड ऑफ फंड. जहां एक म्यूचुअल फंड होता है, वहां पे एक फंड मैनेजर ही आपका फंड रन करेगा. तो उस फंड मैनेजर का जो स्टाइल होगा, यू विल बी प्रोन टू दैट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, राइट. हाउएवर, जब एक फंड ऑफ फंड होता है, तो वहां पे फंड मैनेजर की जगह एक पोर्टफोलियो आर्किटेक्ट बैठता है. वो पोर्टफोलियो आर्किटेक्ट क्या करता है? दे ही और शी सेलेक्ट्स वेरियस फंड मैनेजर्स इन द डिफरेंट एसेट क्लासेस. तो वहीं अगर मेरे पास एक इक्विटी फंड ऑफ फंड है, तो मेरे फंड मैनेजर या पोर्टफोलियो आर्किटेक्ट के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड मैनेजर को सेलेक्ट कर ले उस इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम के लिए, या ग्रोथ को, या कॉन्ट्रा को. वो स्टाइल एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन फैक्टर बनता है फंड ऑफ फंड में वर्सेस अ नॉर्मल म्यूचुअल फंड.
तो अगर मैं मेरे 4 पिलर्स की बात करूं मेरे फंड ऑफ फंड में, ये कैसे सेटिस्फाई हो रहा है? फॉर द ग्रोथ पिलर, इफ यू रिमेंबर आर कैटेगराइजेशन ऑफ फंड ऑफ फंड, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड ऑफ फंड या ओवरसीज इक्विटी फंड ऑफ फंड इस ग्रोथ पिलर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। कैपिटलाइजिंग अपॉर्चुनिटी में एक सेक्टोरल इक्विटी फंड ऑफ फंड या हाइब्रिड अग्रेसिव फंड ऑफ फंड या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ऑफ फंड इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। रेजिलियंस में मेरे पास डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड ऑफ फंड है, जो बेसिकली इक्विटी एंड डेट में मॉडरेट करता रहता है। जब वैल्यूएशंस हायर होगी तो मैं डेट में ज्यादा रहूंगा, और वहीं जब इक्विटी की वैल्यूएशंस लोअर होगी मैं इक्विटी में ज्यादा रहूंगा, डेट में कम रहूंगा। तो वो रेजिलियंस प्रोवाइड करता है। एंड फाइनली लिक्विडिटी के लिए इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड ऑफ फंड या डेट फंड ऑफ फंड्स है। तो अगर मैं समराइज करूं इसी स्कीम्स को, तो क्या बेनिफिट्स है फंड ऑफ फंड के? बाइंग राइट स्कीम एट द राइट टाइम। सो द फंड मैनेजर हियर, या जो मैं पोर्टफोलियो आर्किटेक्ट की बात कर रहा हूं, वो पोर्टफोलियो आर्किटेक्ट डिफरेंट फंड मैनेजर्स को सेलेक्ट कर सकता है उनकी स्टाइल बेस्ड पे, या फिर डिफरेंट सेक्टोरल फंड्स को चूज कर सकता है एट अ गिवन मार्केट साइकिल। कौन से सेक्टर परफॉर्म कर सकते हैं उस बेसिस पे। तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है व्हेन यू कम बाय अ फंड ऑफ फंड। टैक्सेशन इज द सेकंड बिगेस्ट एडवांटेज, जहां मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड ऑफ फंड का, जो एक डेट लाइक एक्सपीरियंस देना चाहता है इन्वेस्टर्स को, बट द टैक्सेशन रिमेन्स आफ्टर 2 years 12.5, जो कि एक बहुत बेनिफिशियल है इन्वेस्टर्स के लिए। थर्ड एडवांटेज है, वाई सेटिस्फाई विद टू व्हेन यू कैन हिट सिक्सेस। जहां मैं एक बात करूं, मैं एक पोर्टफोलियो कंबाइन करता हूं मेरा लार्ज मिड एंड स्मॉल का, लार्ज मिड एंड स्मॉल का इक्वल वेटेड पोर्टफोलियो से मच बेटर है कि मैं चर्न कर सकूं कि लार्ज कैप कब बेटर परफॉर्म कर सके, या मिड कैप कब बेटर परफॉर्म कर सके, या स्मॉल कैप कब बेटर परफॉर्म कर सके। ये सब कर सकता हूं मैं फंड ऑफ फंड में एट अ टैक्स एडवांटेजियस मैनर। क्योंकि अगर इन्वेस्टर ये खुद करना चाहे, फॉर एवरी बुकिंग ऑफ प्रॉफिट he or she will be liable to taxes, but when it is done within a fund of fund ऐसा कोई स्कोप नहीं है, कोई टैक्सेशन नहीं लगेगा। टैक्सेशन केवल तब लगेगा जब इन्वेस्टर्स अपने यूनिट को रिडीम करेंगे। एंड फाइनली ऑल वेदर पोर्टफोलियो एक कंस्ट्रक्ट हो सकता है फंड ऑफ फंड्स के बिहाफ के थ्रू, जहां पे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ऑफ फंड्स जैसे हैं, या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड ऑफ फंड्स जैसे हैं, या फिर इवन इक्विटी फंड ऑफ फंड्स जैसे हैं। क्योंकि इक्विटी फंड ऑफ फंड में भी यहां पे मैं डिफरेंट स्टाइल ऑफ फंड मैनेजर सेलेक्ट कर सकता हूं। जैसे कि इन अ रेसेशनरी इन्वायरमेंट वैल्यू जनरली वर्क्स वेल, वेयर एज इन अ मोमेंटम काइंड ऑफ अ मार्केट, अ मोमेंटम और अ ग्रोथ स्ट्रेटेजी वर्क्स वेल। तो यहां पे मैं वो चेंजेस कर सकता हूं जो एक नॉर्मल या प्लेन वनीला म्यूचुअल फंड में पॉसिबल नहीं है। यही बात करते हुए आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस वन NFO which ICICI Prudential has or is in the process of launching. The fund is called as ICICI Prudential Multi-Asset Active Fund of Fund. ये वही फंड ऑफ फंड है जो मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी में फॉल करता है। इस फंड में द रूल स्टेट्स दैट 30 to 80% विल बी इन एक्टिव इक्विटी स्कीम्स। 30 to 80%। अब ये मैं डिफर कैसे करूंगा? जब मुझे लगेगा कि मार्केट की वैल्यूएशंस हायर है, तो मैं मेरी इक्विटी प्रोपोर्शन कम रखूंगा, मे बी टूवर्ड्स 30%। एंड जब मुझे लगेगा कि मार्केट में वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, तब मैं उसको 80% तक भी लेकर जा सकता हूं। बैलेंस कहाँ इन्वेस्ट होगा? बैलेंस इन्वेस्ट होगा डेट में एंड गोल्ड एंड सिल्वर ETF में। डेट का लिमिट है 10 to 60, गोल्ड एंड सिल्वर ETF का लिमिट है 10 to 30%। यहां पे भी वही बेनिफिट देखने को मिलता है वर्सेस अ नॉर्मल मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड। यहां पे मैं अलग अलग फंड मैनेजर्स को सेलेक्ट कर सकता हूं, सेक्टोरल फंड्स को सेलेक्ट कर सकता हूं। डेट में भी मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं बिटवीन अ अक्रूवल बेस्ड डेट स्कीम एंड अ ड्यूरेशन बेस्ड डेट स्कीम। एंड फाइनली गोल्ड एंड सिल्वर ETF तो है ही। एक और बेनिफिट यहां पे ये देखने को मिलता है वर्सेस अ मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड, इज दैट द इम्पैक्ट कॉस्ट इन द फंड ऑफ फंड इज लोअर। जस्ट थिंक अबाउट इट। जब मैं एक म्यूचुअल फंड रन कर रहा हूं, मुझे स्टॉक्स को लेना और बेचना पड़ता है, जो कि मार्केट में एक इम्पैक्ट कॉस्ट क्रिएट करता है, राइट? वेराज जब मैं फंड ऑफ फंड को कैरी करता हूं, तब मुझे एक रिडेम्पशन करना है फ्रॉम वन म्यूचुअल फंड टू अनदर म्यूचुअल फंड, विच इज रिलेटिवली इजियर एंड फास्टर।
एट द सेम टाइम जब भी मैं चर्निंग कर रहा हूं, देर इज नो टैक्स लीकेज हियर. जब आप मैनुअल असेट एलोकेशन करते हैं, राइट, देर विल ऑलवेज बी अ टैक्स लीकेज व्हेन यू मूव फ्रॉम अ प्रॉफिटेबल asset class to a not to a डिफरेंट असेट क्लास. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आज के दिन में गोल्ड एंड सिल्वर से किसी को एग्जिट करके इक्विटीज में जाना है, तो वहां पे उनका टैक्स पे करना पड़ेगा गोल्ड एंड सिल्वर पे. हाउएवर, जब यही चीज मैं एक फंड ऑफ फंड के रैपर में करता हूं, देर इज नो सेपरेट टैक्स लीकेज विच बिकम्स अनदर बेनिफिट ऑफ अ फंड ऑफ फंड. यहाँ पे टैक्सेशन क्या है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एक्टिव फंड ऑफ फंड में 2 years 12.5. 2 years से पहले अगर आप रिडीम करते हैं तो आपका स्लैब रेट पे टैक्सेशन रहेगा. बट जहां आपने 2 years तक होल्ड कर लिया, उसके बाद टैक्सेशन इज 12.5 इटसेल्फ. इक्विटी, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा एक मॉडल है जो हमको सजेस्ट करता है. ऐसे प्रूडेंशियल हैज बीन यूजिंग दिस मॉडल सिंस द ईयर 2006. एंड ये मॉडल जो जिसको हम बोलते हैं इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स, हैज गिवन वेरी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज results. So for example, in or before the fall of 2008 itself, it had indicated us to book partial profits in equity, whereas it told us to aggressively invest. अगर मैं अभी का ही टाइम लूं, तो मार्च ऑफ 2026 में इसने एक बार इंडिकेशन दे दिया था कि इट इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज. हाउएवर, as the markets went up again, we again signaled that it is a neutral zone. So maybe 50-50 equity and debt is something which you should keep in the portfolio. तो यही मॉडल मैं मेरे मल्टी एसेट एक्टिव फंड ऑफ फंड में भी यूज करूंगा. सिमिलरली इन डेट, ड्यूरेशन और अक्रूवल दोनों ही स्कीम्स इस फंड का पार्ट बन सकते हैं. एंड फाइनली गोल्ड एंड सिल्वर भी रहेंगे इस फंड में, जहां पे मैं एलोकेशन डिसाइड करूंगा बेस्ड ऑन द रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वर्सेस इक्विटी एंड डेट मार्केट्स, एंड ऑल्सो गोल्ड एंड वर्सेस सिल्वर. सो कब गोल्ड अट्रैक्टिव होता है या कब सिल्वर अट्रैक्टिव होता है, उस बेसिस पे भी मैं पोजिशनिंग लूंगा. अगर मैं मेरी बैक टेस्टिंग देखूं इस मॉडल में, सो ओवर सिंस 2010 टिल टुडे, इस फंड ने 1% एडिशनल रिटर्न दिया है निफ्टी 50 के अगेंस्ट. बट द बेस्ट पार्ट इज विद ओनली 50% इक्विटी रिस्क. So even after having only 50% equity risk, this fund has been able to outperform the equity market by 1%. So this is the final details about this fund. This fund has a 1% exit load. However, if you are redeeming 30% of the units even before 1 year, those units can be redeemed without any exit load. Of course, after 1 year, there is no exit load. There is a composite benchmark which includes equity, debt, gold, and silver. And SIP, SWP, STP, सब available है इस fund में. The fund is managed by Mr. Dharmesh Kakkar, who is our fund of fund manager, managing various other fund of funds of ICICI Prudential. It is also managed, the debt portion and commodities portion will be managed by Mr. Manish Bantia and team, and Sharmila and Gaurav Chikane will also be looking at the model of the portfolio. Finally, the NFO dates, NFO is ongoing and it will be continuing till 14th of July of 2026. So with this, I would thank you all for the patient listening. Now we can open the floor for question and answers, and we'll be happy to answer. Thank you. Thank you, Ronak. Thank you for giving us a crisp highlight of what is, FOF, why we can use, how we can use this particular product, and telling about the new offerings which ICICI currently offering. So, would request participants, if you have any questions related to FOF, probably you can put it in a chat box. We are happy to take it here. Uh, yes, so definitely one question, Ronak, here is the expense ratio is same or the higher than common MFs? Right. Thank I you for think. that question. So the limit on the higher side remains at 2.25%. But here you have to understand the expense ratio is calculated basis the fund expense, basically the fund of funds own expense, and added to that is the underlying schemes direct expense ratios. So
But cumulating all of that as well, the cap is at 2.25%. For the hybrid scheme, which we just talked about, the multi-asset fund of fund, the expense is even lower, wherein you can expect it to be around 1.85. Okay. There is one more question about the minimum investment amount. The minimum investment amount remains the same as it is for the mutual fund. Or can we invest in, I think you are talking about SIP. Yes, you can do the SIP as well. The rules remain the same as it is there for the mutual fund. Are FOFs suitable for the beginners? Sorry, Ritu, I'm actually reading the questions. Yes, yes, please, From please. this, No from the chat worries. box Yeah. itself. So, are FOFs suitable for beginners? Also, what tenure should we suggest to the investors? Actually, if you see, FOFs are the most suitable for the beginners, Hmm. because here you are not. It is actually like a two-factor authentication process. There is a one fund manager of the mutual fund, who is basically selected by the fund of fund manager. So there you are actually getting benefit of two layers of approval before it gets to your portfolio. And historically, we have seen that fund of fund actually has a lower standard deviation than a pure equity or a pure debt also, right? Because it is actually owning the mutual fund, which itself is lesser volatile. More clarity required on taxation. See, from a taxation perspective, for the rule of fund, it goes like this: that if your fund of fund holds lesser than 65% in debt, then you can have the taxation of 2 years, 12 and a half. If the if the debt allocation is higher than 65%, which is true for most of the debt fund of funds, then the taxation remains same as the as the debt mutual fund or the bonds, which is slab rate. So lesser than 65%, if it is there in debt, you get the 2 years, 12.5%. Or let me speak it in the opposite side, which is if my equity exposure is more than 35%, then I can have the 2 years, 12.5% taxation in the FOFs. The next question goes as the expense ratio is maximum at 2.25%, not 2.5%. Does the backtesting give us an encouraging result, as the return seems to be lesser than the expense ratio? I'm not sure, because the backtesting actually gave you a 10% kind of a return. We obviously try and adjust the expenses there as well. And other side to it is that when we do a backtesting, no, it is not based on any active calls. Yes. Backtesting is basically done on the index, Correct. right? Right. But when we will be doing it on or we will actually be doing it in the live portfolio, we Hmm. will be taking active calls as well. Correct. For example, between large, mid, and small, we can churn the portfolio. Between different sectors, we can churn the portfolio. And all this happens in a tax efficient manner, by the way. So that is an advantage. If an underlying fund closes for subscription, so yeah, if the underlying fund is closed for subscription, even a fund of fund also cannot take exposure to. Like that. Is the fund actor able to manage, add, remove the fund or the scheme according to the performance by himself, or they need to change the investor? No. So investor, Mahesh has a question wherein are the underlying schemes of the fund of fund are changed by the investor, or it is at the discretion of the fund manager? That is basically at the discretion of the fund manager itself, wherein fund manager will decide which scheme to uh, add on to the portfolio and which scheme to remove. Investor has the choice, which is related to entering and exiting the fund of fund. Hmm. Are we looking at captive funds or the entire gamut of funds available? So this also depends on which fund of fund you are choosing. So for example, in a diversified equity active fund of fund, there are only six funds which are allowed, which are all diversified. Whereas in a diversified equity omni fund of fund, you have a situation where you can actually, we have one of that fund, which is called diversified equity omni fund of fund, where we can actually buy schemes of other AMCs as well.
So in a ICICI Prudential fund or fund of fund, rather fund of fund, you're actually able to buy the uh, funds of other AMCs as well. So that is why this is not a product, it is a solution. So instead of having, 10 different AMCs, can you have one fund which can allocate to different AMCs as well? So it will always differ depending on the fund of fund which you are choosing. Yes. What is the risk profile of this fund of fund? So I am assuming you are talking about the multi-asset active fund of fund. In multi-asset active fund of fund can basically be suggested to anybody because it is a asset allocation product. It will have a lower risk than a pure equity scheme, whereas it can have a little higher risk than a debt scheme. So the asset allocation basically is a risk adjusted return profile rather than just controlling the risk or just controlling the return. So it will lie somewhere in the middle. So any person who is basically, according to you, suitable for the multi-asset mutual fund can be considered for the multi-asset fund of fund as well. Which investment is beneficial? Sorry, I missed one question. I'll go to that first. Through fund of funds, can we get the benefit of regular and direct? Yes, the same things apply for the fund of fund as well. There is a regular and a direct as well. The scheme limit, the 2.25 limit, which I spoke, is for the regular option. Which investment is beneficial, lump sum investment or SIP? For the multi-asset allocation, we are actually encouraging lump sum investment today because as the market situations persist, it is actually best to do asset allocation because till yesterday everybody had the thought process that the war is ending, but today the situation remains something else. Had you been invested in only a pure equity scheme, the portfolio would look very different versus a asset allocation scheme, right? Secondly, this scheme actually does the what SIP does for you. So what does an SIP do? SIP basically tries to buy more units as it falls. The fund of fund will also do the similar kind of a thing, wherein today they will allocate, or for example, can allocate more to debt depending on the market valuation. And when the market valuations corrects, they can reduce their debt exposures internally and move to the equity or the gold and silver allocation of the fund. So lump sum can be directed for this fund. Yes, there are other higher risk fund of funds where you can look for SIPs as well, such as aggressive hybrid fund of fund. Their SIP are also much welcome. What is the investment objective of this fund of fund? The investment objective of this fund of fund is to invest in different asset classes, different less correlated asset classes. Equity, debt, gold and silver typically have lesser correlation with each other and generate a risk adjusted returns, right? So as I said, it will have a higher risk than a pure debt scheme, obviously, but a lower risk than a pure equity as well. What is the yeah, okay, I read that. Okay. Yeah, I think most of the questions are answered. Thanks, Ronak. I think lot many questions. Okay. Just for last thing from the MFD point of view, I would like to ask why MFD should suggest fund or fund, because if as an MFD, if I go and I tell my client like this is one of the fund where you can invest and this will give you exposure of the multiple assets or the multiple funds probably, then Yes. why investor need us as an MFD? Why he cannot go direct? Correct. Good question. So, see, the point here is that when we do it, when we suggest different funds, no, even if as an MFD, if I'm giving the call of today investing in gold schemes, right, and after a year I tell to exit the same to the investors, you would have noticed as an MFD also that this rarely happens. The highest flow of gold ETF was in January of 2026 when the prices peaked. And last month, if you noticed, it was in the negative. There was a net outflow, which basically means that the investor behavior is something which has to be controlled. Doing it
on the investor's end, like cutting a separate check for every time is a difficult task. Whereas in a fund of fund, when it happens automatically, investors stick for a longer time horizon because there is not much hassle. So we have generally seen for us, hybrids have become one of the dominating, we are actually one of the dominating force in even hybrids. Even in hybrid funds, something similar is happening where the allocation is done internally without any external, request of redemption and subscription of different schemes. We have seen that, the flows there are quite consistent and they stay rather than the other pure equity where the flows become a little volatile. So for the MFD, that becomes one of the fundamental reason. Obviously, there are other reasons as well, wherein the expense ratio here becomes a little higher. So basically, from a business perspective, also this becomes attractive to the for the distribution side. Perfect. Does Wonderful. it also invest into foreign funds? There's one more question. Sorry, my Yes, chat yes, box is open. yes. So there's one more question which says that does it also invest? So there are specific overseas fund of fund which are there, Mm. which can take exposure to the foreign funds. For the other funds, only domestic schemes are allowed. The ideal, who is Okay. the ideal investor for fund of fund? As we gave an answer in the right in the beginning, wherein actually the people who are starting the investments know this becomes one of the very suitable product. And secondly, also few of the investors who have not been able to time the market, no, they also and still are looking for those products which can be a all season kind of a product. They are also suitable because even if you go for a pure equity fund of fund, there also it becomes an all season because the styles of the fund managers can be managed. The sectors exposures can be managed via these separate funds. So that becomes, so I think ideally any investor will be suitable for this. It is just that you have to identify uh, who is the most appropriate one. Yeah. Okay. I think I think that was the last question. Yes. Okay. Perfect. So thank you, Ronak. Thank you for answering all the questions and reading by yourself and answering the questions and explaining fund of fund concept in a easy way so that normally distributor thinks that is not the right product to give it to the clients just because that will not. I mean, I am not adding any kind of a value to the client's portfolio. So that's the mindset probably, and I am hoping that mindset probably will change after this session, as this is helping your clients and helping you also to solve lot many other problems, probably, and in the benefit of the clients only. Definitely, so FOF can be a part of investors core portfolio, and definitely one should look at the FOF as a category to sell. Thank you, Ronak, for your time, and thank you, participants, for joining in. Thank you so much. Let's wind up this Yeah. call. Thank you, guys. Yes.